Hi all, welcome to our new business series. We are going to talk about how podcasts are going to help all your businesses. And to start off this series, I think I have a very special guest for you. He has contributed a lot in B2B business in India. So he is amongst top 100 people managers in India awarded by Economic Times. He has a very beautiful journey from being nowhere to now known everywhere. He is none other than Mr. Sandip Chhettri. So, welcome Mr. Sandip ji on our show. And I think 22 years is not a small time. Yeah. Being a CEO of TradeIndia, आप बताओ आपके जर्नी के बारे में. First of all, thank you, Tushar, for inviting me for this podcast. Really excited. Talking about my journey, I would like to say कि ये बहुत ही एक fatal journey है. It doesn't happen to everybody, right? And I keep on telling this in most of the forums and in a lot of business schools also when I go and tell my story. क्योंकि after doing my BSc in physics and then doing my postgraduate diploma in electronic commerce, I thought of joining TradeIndia. जब मैंने TradeIndia ज्वाइन किया, typically people will think that you'll join, you are a technology guy, you will join for technology department, right? But I joined this company 22 years back as a moderator, data entry guy. Right. It was like you get the data from the sales team, you just update the data, and from there on, being the CEO of the company, there are a lot of learning. It will take all your podcast time to explain that. Okay, but yes, what I'd like to share with you is for specifically for people कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता ना, because from that perspective, when I was doing that data, right, I came to know a lot about the industry specifically. Okay, so when I industry, I used to know where you will get T-shirts in India, where you will get food products in India. So that helped me because e-commerce is all about category, right? So that helped me to build the whole category, how the category should be, what will be the subcategory, what will be the tree structure when I was putting the data, and which are the cities which is popular. From there on, started building the whole TradeIndia, the framework for categories, and then started building a lot of products. I got promoted, every 3 months, 6 months, and then I'm here the last 4.5 years. Specifically, I'm running the business first as a COO of the company, and last almost 2.5 years as a CEO of the company. Very nice, and congratulations for your achievement. मतलब हमारे लिए तो बहुत inspirational है कि वो thought process when you started as a data entry analyst and ये जो पूरे जर्नी के बाद now you're seeing yourself. How do you feel about it when you look back? Feel good. I feel lucky also sometimes. Okay, because this, as I said, this doesn't happen to everybody. But behind this, there was a lot of hard work. Right? Hard work in the sense, ये समय नहीं देखना, learning faster, कि कितने जल्दी सीख सकते, कितना ज़्यादा सीख सकते हैं ना. And of course, looking at no time, right? We are working on Saturdays, we are working on Sundays. Thinking day in and out at what is that new thing you can build, what is the consumer is thinking, what is the consumer behavior, yes, satisfaction is there. Of course, there was a lot of, when I started it, there was a lot of peer pressure also, like, what are you doing? We have done so much of studies, you were one of those top students, and you're working as a data entry guy. And your friends are become, somebody has become engineer, somebody has become cleared UPSCs, so you have a lot of such peer pressure, family pressure, society pressure, right? Okay. But I was always focused there. I knew what I'm doing and what I wanted to build, okay, and how it will help me. And I was doing something which I was interested at, right? That building product, because I had done e-commerce, I knew that what e-commerce is all about, how it is. It's so new for, specifically for India, it was very, very new, right? So very satisfied what I'm doing, and I'm enjoying what I'm doing today. And of course, that you feel very good that how your contribution towards the MSMEs and SMEs of India. I always feel that, I always tell to everybody that my vision is not only taking TradeIndia to the next level, but also helping 63 million SMEs in India
go digital, Right. yeah, and also make them digitally saksham. So this is what we are doing. That is the whole mission and vision of myself and my company. Feeling really good. Yeah. So as we were discussing that you're also starting a business series for specifically for MSMEs. So what was the idea behind it? Okay. So see, I've been in this, SME ecosystem since 22 years. What we do today is typically as a platform or as a marketplace, or you see any other platform today, they provide one thing is access to technology, right? Yeah. And then they might, work for access to marketing, right? So they do a lot of marketing here. Okay. And because the way technology is changing, the way digital marketing is changing, and the online ecosystem is changing today, तो वो change हो गया. पहले it was Facebook, then it was YouTube, okay, then it came to Instagram then came to Reels, okay, and YouTube started Shorts, and people consumer is like impatient today, right? Yeah, Right. yeah, they want to see video as a content, okay. And that is where I thought, what is that we can do? And I always believe on this, that 3 V's of digital marketing, right? What are the 3 V's? Is vernacular, voice, and video, right? Okay. So how this we can, address all these 3 V's, okay? And we also consume lot of content, specifically today when we go to different digital channels. But one thing with content which was missing today was the story of MSMEs, Right. okay. And if you see the whole economy of India, 33% of the Indian economy, okay, is contributed by MSME. And they are the real heroes. They are the real heroes, and nobody was telling the story of these real heroes. Right. Okay? And because we work closely with the MSMEs, I thought that how can I and we as a platform take the stories of the real heroes of Indian economy to the global audience, to the world. Right. Okay, that is where we thought that why not start this podcast. Okay, because today it's all about storytelling. If you have to sell a product, also you have to tell a story. Right? If you have to sell anything, everywhere it's all about storytelling. And then what happened? I'll show you one more very interesting. I was doing, because I do lot of learning every year. So I was I was there in IMK. So I'm one of the alumni of IMK. When we were studying there in IMK, we used to do a lot of case studies, okay. And these case studies were basically of different organizations, right? And what is the struggle they faced, how they came out of that struggle, how they started building technology processes, and you did a lot of case studies. So you learn those case studies in all this business school today, right? But actually, practically, we have these SMEs, these are the case studies, right? And their story, we thought that why not take this story to the world, and that's how we started this merchant mic, primarily. Yeah. Very nice. And all the best wishes from my side also. Yeah, thank you, sir. What I feel personally after this influencer marketing and why I started a podcast. So, what I feel personally after this influencer marketing, podcast marketing is one of the powerful weapon. मतलब जहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग के साथ साथ एक ऑथेंटिसिटी से we can deliver our content, and all these businesses, they can come online and they can actually talk about their success stories, their USPs, and their strengths. Also weaknesses they can discuss with their customers if they want to have any interactions after the podcast. इससे ना बहुत सारे filtration चले जाएंगे and they can directly connect to their target audiences. And it will eventually help them getting a lot of leads maybe and conversions और जो भी उनका targets है. Correct. So I am really happy with whatever we are thinking together actually. So I would like to add one more thing. Okay. So why again their story? Okay. Today, if you think about Microsoft, what does it comes in your mind? Microsoft means Bill Gates. If you will realize, okay, Bill Gates' face, right? Ratan Tata, right? When you talk about Apple, Steve Jobs, right? Yeah. Why? Because
there is somebody who is there and you use to that, and what is the thought process of that particular person, we relate with them, and we then the trust builds, right, for that particular brand. Few years back this was difficult, right, because they had to really build a big empire to do that, and they have to invest lot of money to do that, right, because but today in this digital space anybody can do that, right, okay. And when there is a brand and some people will know who is behind that brand, what is the thought process of that brand, that trust will be built, okay. That's one. Second is because of the digitization, lot of cybercrime, lot of fraud which is happening today, okay. If you have to buy and sell, because we are a platform, right, if you come you can discover, you can connect, but you don't know who is behind that brand, right. But if you know who is behind the brand, that will definitely help this SME to build trust with their buyer, existing buyer, and with the other new buyers also. So this will also help them new acquisition, and the conversion cycle will be faster. If you see a conversion cycle of the SMEs, it will be anything between 15 days to 45 days or 60 days. It will take that much of time, right, because buyer will try to inquire about that company from different places, understand whether the manufacturer is genuine, not genuine. It will take a lot of time. But when you do such kind of podcast, talk about the story, show the journey, like you say, authenticity, what they are building, USP, manufacturing, the factory, you show everything there, and also tell what were the experience, right, what was their struggle, what is that value in terms of their vendor, what are the quality they are using. It becomes very easy for a buyer to understand. right. So that will build trust, and that will help. And because of digitization, there is no boundary today. You can reach out, sitting at a small city like Panipat also. You can have a aspiration to go global. Right. And this is one of the other medium, which I feel will definitely help MSMEs, to build trust. That's what I thought, that why not Merchants Mike, and we have the same thought process, right. And I think this will definitely help, MSMEs. Right. So, any advice that you want to give to all these MSMEs while going on any podcast or doing any strategy while going online? Yeah, when telling the story, don't only talk about the advantages and about your product, about your brand. Because there should be empathy, sympathy, and the conversion should be more related, right? Where the audience can understand that what he's trying to say. Right. So typically, it should not be considered as a marketing podcast. I would say it should have a personal touch. Absolutely. Right? Where their target audience can relate to them. Yeah. And then only I think they can actually form a bridge between them. So be genuine, very, very genuine, and be transparent in that Right. content, because ultimately you cannot say that मेरे product में ये अच्छा है, मेरा product ये है. Again, it will become just like an advertorial rather than being a podcast. It should be about him and the brand being related with him. Correct. So I'll give you one very interesting example. There was a company who had built a brand called Pasta Leo. Right. Okay, and then he related why Pasta Leo, right? Pasta and Leo is a Gujarati word you take, So the interesting story behind the brand, when you tell that story, that why Pasta Leo there is a story behind the thought process behind that particular brand name, then people can relate, and when the people can relate, and he's very genuine talking about it, so that trust factor comes in. So on your podcast, आपने क्या सोचा है कि in that one platter इतने सब लोगों को कैसे एक direction मिलेगा? So इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोचा, and one thing is जो पॉडकास्ट हम करते हैं वो नॉलेज शेयरिंग भी होना चाहिए. ओके, तो उसमें हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को रखे. पहला वाला एस्पेक्ट तो रखे कि रीजनल रखते हैं, सो हमारे पास जो कस्टमर्स है, चाहे वो मुंबई से है, गुजरात में, अहमदाबाद में है, या चेन्नई से, कोलकाता से, तो हमने उनका स्टोरी लेके जाने का ट्राई किया, बिकॉज हर जगह अपना अपना इंडस्ट्री है, राइट. तो एक तो रीजन रखा, दूसरा वर्नाकुलर भी ट्राई किया, क्योंकि बिकॉज मेरे को कुछ और बहुत 4 लैंग्वेजेस आते हैं, तो मैंने ट्राई किया कि मैं वो 4 लैंग्वेजेस में कर सकता हूँ, बिकॉज लैंग्वेज जितना आप वर्नाकुलर रखेंगे तो आप और ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं. इनफैक्ट एक बहुत अच्छा स्टडी भी है कि ये बताता है कि जो गूगल में जो भी सर्च होता है, 10 में से जो 3 सर्चेज होते हैं वो वर्नाकुलर होते हैं, राइट. ओके, वेयर है जब
हम वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो रिवर्स है, ओके। 3 इंग्लिश में होंगे पर 7 जो होंगे वो वर्नैकुलर होंगे। इट्स द अदर वे अराउंड जब वीडियो करते हैं, राइट? क्योंकि हर बंदे को अपने लैंग्वेज में कंटेंट देखना चाहता और है। इंडिया में तो इफ यू नो कि हम लोग लैंग्वेज से फटाक से कनेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ, ठीक है। और हमारा जो ऑडियंस है वो जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, Right. वो हर लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो एक तो पर्सनलाइजेशन के हम वर्नैकुलर, दूसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर रहे हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस इंडस्ट्री का भी नॉलेज देते हैं, ओके। एंड सेकेंड इज़ जो बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उनको ये पता चले कि उनका उस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, जो थीम में कह रहे हैं। एक थीम रखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जो सपोर्ट करते हैं उनका उनको जो प्रोसेसेस क्या फॉलो करना चाहिए, उनका मशीनरी यूज़ होता है तो मशीनरी किस तरह के मशीनरी यूज़ होता है, अगर मशीनरी को ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीद सकते हैं, ख़रीदने के लिए अगर लोन चाहिए तो कहाँ से मिल सकते हैं। सो इन्हें काफ़ी हमने एक थीम बनाया है जिससे कि जो हमारे यूज़र्स है, व्यूअर्स है, उनको काफ़ी सारे एक तरीके से कंटेंट मिल जाता है जो कि कहीं पर भी मिलना, सर्च करने से भी शायद ना मिले, है ना। सो दैट इज़ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या जो फाउंडर है उसका विजन एंड उसका जो थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्या है, उस ब्रांड को बनाने में, तो हम उसको एम्फोसिस करते हैं कि आपका, क्योंकि तभी यूज़र कनेक्ट कर पाएगा, है ना। सो दीज आर द एस्पेक्ट जो हम लोग ध्यान देते हैं जब हम किसी के साथ भी पॉडकास्ट करते हैं। एंड दैट इज़ वेयर मेरे को लगता है कि हर जो MSMEs है जो पॉडकास्ट के थ्रू अपना स्टोरी बताना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान दिया तो दे विल हैव लॉट ऑफ सक्सेस। एंड एक पॉडकास्ट का या फिर एक फ्राइट रहता है, लोगों को एक डर रहता है कि हाँ कैसे करें, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम आर मे बी नर्वस, तो उसके लिए क्या एडवाइस है? मैं तो उनको सिंपली बोलता हूँ कि आपको अपना स्टोरी बताना है, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, और इट शुड बी मोर कैजुअल। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना कैजुअल बन सकता हूँ उतना कैजुअल बनता हूँ, ओके। एंड काफ़ी लोग मेरे पास आते भी है कि हम क्या प्रिपेयर करें, आप मेरे को पहले से क्वेश्चंस दे दो, है ना। तो मैं ट्राई करता हूँ कभी भी उसको क्वेश्चंस ही नहीं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी उनको बात करता हूँ उसको ऐसे बात करता हूँ जैसे हम एक चाय के में बैठे हैं, और उनके आंसर से ही मैं ट्राई करता हूँ कि उनको क्वेश्चंस पूछा जाए ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, ओके। एंड बैक ऑफ द माइंड मेरे पास वो होता है कि मेरा आई नो मेरा टेम्पलेट क्या है ना। तो उनको इतना ईज फील करता हूँ क्योंकि वो बहुत लाइक आप यू करेक्टली सेड दैट बहुत ज़्यादा लोग कैमरा देखते ही नर्वस हो जाते हैं, बट ट्राई करता हूँ कि उसके जो क्वेश्चंस को इतना ईजी रखूँ कि वो आंसर दे पाए। एंड दूसरे बंदे का भी हम ट्राई करते हैं कि उसका पैशन क्या है, पैशन के बेसिस पे भी हम हम उसको क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एंड वी गेट गुड क्वालिटी, मतलब उनका जो आंसर्स होता है जब उनको लगता है कि उसके जोन में जा रहे हैं, है ना, तो वो काफ़ी अच्छा आंसर देते हैं। बट सजेशन ये होगा कि कोई प्रिपरेशन नहीं करना, आपको खाली अपना जो स्टोरी है ना, जो आप किसी एक को बता रहे हो उसको खाली बताना है। हम तो ऐसे भी कितने लोगों को बता देते हैं कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है या फिर मैंने ये किया, इट इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ योर्स। इनफैक्ट एक हैक जो मैं हमेशा करता हूँ कि मैंने आज भी जब किया है, हैक ये होता है कि मैं जो कैमरामैन को पहले बता तो स्टार्ट कर दे, हम गप्पे मार रहे हैं, बस उसको बताना नहीं है कि स्टार्ट हो रहा है ना। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फॉर द MSMEs हु वांट टू कम फॉर अ ब्रॉडकास्ट, उनके लिए है कि आपको कुछ भी नहीं करना, कोई प्रिपरेशन नहीं करना, आप सिंपली बैठ के आपको अपना स्टोरी बताना है, एज सिंपल है। और खुद का बिजनेस खुद से ज़्यादा किसको पता और किसी को नहीं पता, राइट। वही सारे बताने हैं, दैट्स इट। आपको उनको कोई प्रिपरेशन नहीं करना। तो संदीप जी, मैंने जब ये बिजनेस सीरीज लॉन्च किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि फ़ायदा क्या है, लाइक हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। मतलब ठीक है एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, बट मुझे फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ से। सो आई हैव माई डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बट टुडे आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि कोई सक्सेस स्टोरी है या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लाइक इट हैज़ रियली हेल्प्ड अ लॉट फॉर पॉडकास्ट, यूजिंग पॉडकास्ट एज अ मार्केटिंग मीडियम। सो आई विल गिव वन वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। एक थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर है, वो ट्रेडिशनल वे से मार्केटिंग कर रहा है। एंड अगर आप आज के यंग जनरेशन स्टार्टअप्स देखोगे जो कि काफ़ी सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आ गए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, क्योंकि वो डिजिटली आज अवेलेबल है, वो यूट्यूब देखता है, वो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, राइट।
तो ये तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, इनके साथ हमने जब ब्रॉडकास्ट किया और जब हमने इनके बारे में बताया कि ये क्या करते हैं, सो दे हैव सब वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक नो वाटर फेस वॉश बनाते हैं। ओके, जस्ट इमेजिन करिए, ओके। उन्होंने एक टिपिकली क्या होता है कि जब हम इंडिया में जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसमें उनको कॉन्स्टिपेशंस के लिए क्या एक ना हींग और तेल यूज़ करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन, तो उन्होंने उसका रोल ऑन बनाया है। दिस आर सम वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो क्या होगा, उन्होंने पॉडकास्ट के थ्रू ना ये इनोवेशंस के बारे में बताया, एंड जो यंग जनरेशन जो ये स्टार्टअप्स है या जो भी है उनको ये काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने ये देखा पढ़ा, और उनको ये बड़े कुछ ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स है ये ब्रांड्स ने उनको कनेक्ट किया कि आप इतना इनोवेशन कर रहे हो, पर किसी को पता ही नहीं था इस इनोवेशन। एंड जब फाउंडर खुद ही बोल रहे हैं कि हम इसे इनोवेशन कर रहे हैं और हमारा अपना R&D लैब है जहाँ पर इस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, तो दे गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम बिग ब्रांड्स उसकी वजह से, एंड दैट इज़ वेयर स्टोरी टेलिंग अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये लिखता, कंटेंट को लिखता तो मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट? बट जब मैंने ये पॉडकास्ट के थ्रू बताया कि मैं इस तरह का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो द ब्रांड स्टार्टेड लुकिंग एट इट, बिकॉज जो परचेज मैनेजर्स होते हैं इन ब्रांड्स के, दे आर ऑन इंटरनेट टुडे, राइट? दे आर ऑन यूट्यूब, वो इंस्टाग्राम में है, और उन्होंने इसको हमारा जो ये पॉडकास्ट जब यहाँ देखता है, ये कंटेंट को देखता है, तो दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद दैट, राइट? तो एक तरीका है कि आप किस तरह से जो यूज़र है जो ऑनलाइन है उसको आप इसके थ्रू कन्विंस कर सकते हो, और कन्वर्जन में हेल्प करता है ना। एंड दिस इज़ वन आई थॉट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसने ये किया है। तो एग्जाम्पल है कि कैसे पॉडकास्ट भी इनबाउंड न्यू एक्विजिशन में हेल्प करता है। आई विल ऑल्सो टेल यू वन ऑफ माई एग्जाम्पल्स जहाँ पे वी हैव डन वन एपिसोड फॉर एन एक्टिंग कोच, ठीक है? तो भी लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जिसको एक्टर बनना है उसको जाके एक्टिंग सीखना है, करेक्ट? बट जनरली देर आर पीपल आफ्टर वॉचिंग दैट, देर आर पीपल हु आर कमिंग बैक टू मी एंड सेइंग कि ना दे हैव एक्चुअली, I mean, it has actually helped them understand कि it is not only for acting. Personally, उनको help करे to express. That is the basic funda of any form of acting. तो be it at interview, be it at their बोलते हैं ना group discussion या फिर presentation, it has helped them a lot. So you never know. I mean, किसको कहाँ जाके क्या help हो जाएगा. So नहीं, एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग ऐसा चीज़ है ना, मैं आपको ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग पैंडेमिक मेरे वाइफ ने, बिकॉज आप इतना ज़्यादा घर पे बैठते हो, राइट? मेंटली आपको बहुत ज़्यादा एक मेंटल पीस के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसने ऑनलाइन एक्टिंग क्लास किया, सोचो। एंड ऑनलाइन एक्टिंग क्लास करके तो वो फन देखते थे ना कि किस तरह से एक्टिंग करना है, हंसना है, सो दैट एक ना थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हो जाता था, है ना? एक अलग जोन पे चले जाते हैं। एंड आई मीन आई थिंक this is one way, and it is not only about business, it is spreading happiness, it is spreading knowledge. So यहाँ पे हम लोगों ने एक sustainable living के ऊपर एपिसोड किया था। So you won't believe, after a month's time मुझे ना 2-3 लोगों ने वीडियोस भेजे उनके बालकनी के कि हम लोगों ने ये सब स्टार्ट कर दिया। I mean I never expected, चलो एटलीस्ट 2 लोगों ने तो कर दिया, बट genuinely उन्होंने मुझे भेज के बोला कि अरे यार वो एपिसोड कितना अच्छा था, और लाइक हाउ ब्यूटीफुली वी कैन लिव आवर, बोलते हैं ना, बेसिक लाइफस्टाइल. सो इट इज योर कंट्रीब्यूटिंग सम गुड मैसेजेस टू यू नो योर फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सी, नॉलेज इज ऑलवेज गुड, एंड नॉलेज कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए. मैं तो 2 चीज़ें बोलता हूँ, सीखने का मौका कहीं पर भी मिल जाए ना, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज है ना, शेयर करना है. जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आपके बारे में ही 2 बातें करेंगे. राइट. आई थिंक दिस इज़ ऑलवेज अ गुड वे, एंड आई थिंक पॉडकास्ट वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप अपने बारे में ही नहीं, अपने नॉलेज भी शेयर करते हैं. एंड पॉडकास्ट इज़ ऑल्सो मीडियम. इमेजिन जब हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ प्रिपेयर करते हैं, या फिर किसी एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ रेडी करते हैं, इट इज़ ऑल स्ट्रक्चर्ड. बहुत सारे बोलते हैं ना उसके बैंडविड्थ्स रहते हैं, इतने ड्यूरेशन में इतना ही बोलना है, ये करना है, ऐसा जाना चाहिए, ऑडियंस को ऐसा ही हिट होना चाहिए. इमेजिन दैट देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस टू इट, बट पॉडकास्ट इज अ मीडियम जहाँ पे ऑर्गेनिकली यू आर जस्ट फ्री फ्लोइंगली जनरेटिंग कंटेंट. एंड एज गूगल और एनी अदर सर्च इंजिन, बी इट यूट्यूब ऑल्सो और एनी ऑफ देम, सब लोग अभी टेक्स्ट टू वीडियोस
के ऊपर स्विच हो रहे हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दैट विल ओनली फेच लॉट ऑफ कंटेंट, एंड आई नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू से. खाली ये नहीं है, वीडियो नहीं है, आज की डेट में सचिन कहता है हेल्पफुल कंटेंट, राइट? हेल्पफुल कंटेंट यही तो है, राइट. जो एक आप लिखते हो वो नहीं है, ये हेल्पफुल कंटेंट है. जो एक एंटरप्रेन्योर या कोई भी अपने स्टोरी बोलता है, इट्स हेल्पफुल कंटेंट. राइट. एंड हेल्पफुल करते से अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंट कुछ भी नहीं है, राइट? So, with this discussion, can you just summarize 3 master tips from your end for our viewers? So, first is, talk about how you build the brand. Second is, who is behind it, what kind of people you have, what kind of, the USP of the brand. And third, of course, what is that value you bring from your product, in that podcast. So these are 3 aspects. If you take care, I think this will really help you to acquire more customers. Yeah. And the last one is the personal touch. Don't forget that. Yeah, personal touch. Of course, yeah. And thank you so much for coming here. And I really hope that we all contribute to our society and bring all these SMEs on our podcast and help them achieve their goals. Thank you so much. Thank you, Tushar. And I really like your initiative. I hope people will get a lot of insights from this, and they should not be afraid of going in a podcast. We want all of you as influencers. Yeah. And second is, we are in the same vision and mission to make this SCBs digitally structured, and podcast is one of that medium to become, make this SCBs digitally structured. And I think to launch this with our first episode, I think you're the best person who can actually advise them everything. Thank you so much. Okay. Thanks, sir, for the time. Thank you.